Bismillahirrahmanirrahim. Soil generally have a problem. We have a problem. जहाँ भी साइल होगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर होगा. तो एक तो साइल बनता है एक इरोजनल प्रोसेस से जिसको हम वेदरिंग कहते हैं, और दूसरा साइल वो है जो कि बन जाए और फिर वो ख़त्म हो जाए. So यहाँ पे we are concerned with the loss of the soil. This erosion is also known as simply erosion or accelerated erosion, which is defined as the removal of the topsoil or land surface by running water, by wind, by ice, or any other geological agent, even including gravitational pull or soil creep. It occurs at high rate, causing serious loss of top fertile soil. The loss of soil exceeds its formation. The loss of soil from farmland may reduce crop production whenever soil surface is removed. तो फर्टिलिटी कम हो जाती है, सो रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन, लोअर सरफेस वाटर क्वालिटी, लोअर्स सरफेस की क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है. फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल, फॉडर, सिल्टिंग, डैमेजेस ड्रेनेज नेटवर्क सिस्टम, मिसयूज ऑफ लैंड, mismanagement of arable land, deforestation of trees, overgrazing, and poor soil and water management all contribute to the loss of soil fertility, water supply, and crop yield. FAO के कुछ estimates हैं वर्ल्ड वाइड. FAO जो लीड ग्लोबल पार्टनरशिप ऑब्जर्व that 75 बिलियन टन्स PG में ये मेजर करते हैं is eroded per year worldwide from arable lands. Arable land means cultivated lands, causing financial loss of US dollar equivalent to 400 billion per year. Erosion promotes flooding, silting of water bodies, disruption of communication system. In US alone, some 1524 million megagram tons of soil is eroded, which is severely affected about 90 million hectares or 200 million acres of crop lands. Situation in Pakistan is not different. Soil erosion occurs at a rate of up to 10 tons per hectare on 70% of the land in the soil. This means कि एक हेक्टेयर में से 10 tons of soil is lost every year hectare से. Torbela, Mangla dams are losing storage capacity due to silting and sedimentation. Torbela और Mangla जो है ये Varsak has already lost its storage capacity. So this all silt or dirt or stone, it has come from somewhere else, has been deposited. So movement followed by deposition is causing the storage capacity of our dams. This is a map, you can see it easily, you can download it, your net से download हुआ है. तो you can see कि हमारे जो मुख्तलिफ इलाके हैं पाकिस्तान के कितने eroded हैं, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है. तो highly eroded areas जो येलो हैं, रेड हैं, they are highly eroded. Green area चूँकि forest is there, so they are less eroded as compared to the
other one. This is another figure. ये 1993 से लेके 2003 तक का है. तो यू कैन सी के पंजाब में और 93 में कितने था और 2003 में कितना, ये दोनों बराबर हैं, एक ही फिगर शो कर रहे हैं. सिंध में 2003 में ज़्यादा इरोजन हो गई है. केपी और फाटा, केपी वुड बी खैबर पख्तूनख्वा. नाउ since this is an old figure that used to be फाटा there, now there is no फाटा. वहाँ भी आप देखें कि 4000 से ऊपर है. और बलूचिस्तान में आप देखें कि पहले ज़रा कम था, अब ज़्यादा हो गया है. Silting and sedimentation has promoted due to rapid denudation of the catchment area of river Indus और झेलम. मेन काज हमारे यहाँ जो दरिया सिंध है उसमें ऊपर से जो पानी आता है रिवर झेलम से और इंडस से, इंडस तो ऊपर गिलगित और हुंजा से चल के आते हैं. तो ये तमाम पत्थर, स्टोन, सैंड अपने साथ लाता है क्योंकि स्लोप काफ़ी है. इन पाकिस्तान 76% ऑफ द टोटल अफेक्टेड एरिया लैंड, इसमें से 40% विंड की वजह से है, 36% वाटर इरोजन है. About 14,000 hectare land per year is damaged due to erosion in Pakistan. These calculations they vary. They vary upon the type of method we use, type of agency or type of organization which measure them. This is again another view of Pakistan major causes of land degradation. तो आप देखें कि वाटर इरोजन, विंड इरोजन, सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग, ऑल ऑफ देम दे हैव डिफरेंट रीजंस. मेजर काजेज हैं कि पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में और खैबर पख्तूनख्वा में विंड ज़्यादा है और वाटर ज़्यादा है. बलूचिस्तान में वाटर ज़्यादा है, नॉर्दर्न एरियाज में वाटर ज़्यादा है. पंजाब में यू कैन से कि विंड इज़ मोर बिकॉज डेजर्ट्स आर इन द पंजाब. सैलिनिटी इज़ मोर इन पंजाब. सिंध में सैलिनिटी इज़ देयर. केपी में या खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, नॉर्दर्न एरियाज में ऑल्दो सैलिनिटी इज़ देयर बट कम है. इसी तरह आप देखें कि water logging is more in Punjab and Sindh than the other provinces. These are some of the causes. ये ज़रा recent figure है 2007 की है, you can download it from the net. 1 billion ton soil per year is lost through erosion. That causes silting of water reservoirs. River Indus at Karabakh carries 2,908 tons per mile of sediment load. River Jhelum at Mangla has sediment load of 5,968 metric ton per mile. Indus River carries sediment load of 25,000 tons. River Jhelum 7,000 per year. River Chenab 8,000 per feet. This is again another Grosset was an organization which made a survey for Pakistan, salinity and other things. So उन्होंने वाटर इरोजन का भी किया. तो आप देखिए कि लाइटली इरोडेड लैंड पाकिस्तान में 6,800 है, मॉडरेटली स्ट्रांगली टोटल इतने हैं 28% लैंड इज इरोडेड. टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन दो किस्म का है ओरिजिन की वजह से. एक को हम जियोलॉजिकल इरोजन कहते हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन है, वेदरिंग ऑफ सॉइल, weathering of rocks, which is geological process, slow process और perceptible नहीं है इतना
बड़ा स्लो होता है और डेट काजेज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। दूसरा है एक्सेलरेटेड इरोजन, जिसको कॉमन सिंपली इरोजन कहते हैं या इरोजन कहते हैं। एक्सेलरेटेड मीन्स वेरी क्विकर लॉस, दैट इज more loss than its formation. Normal erosion, it is called geological erosion, which is a natural process, universal process. It has been going on and will be going on. Annual removal of soil is about 0.2 to 0.5 megatons per hectare, you can say per acre जो है। Natural erosion is the wearing away of the earth or rock parent material surface by water, ice, temperature, other physical factors, and depending upon the vegetation condition, slope condition. The soil lost by erosion equals to the soil formation. जितना soil loss होता है उतना soil बनता है। Accelerated erosion, जिस तरह मैंने कहा, acceleration means quicker loss of soil through erosion exceeding the normal rate of removal of soil is called accelerated erosion. In the common language, we call it erosion. Erosion always means accelerated erosion. It results due to human activities or in some cases by animals. Man-made erosion includes deforestation. अगर आप deforestation करेंगे तो रेनफॉल रेट तेज़ होगी। ओवर ग्लेजिंग करेंगे, वेजिटेशन ख़त्म होगी, कम होगी तो भी होगी। अगर आप मार्जिनल लैंड्स को कल्टीवेट करेंगे, ये हमारे हिली एरियाज़ में आप देखें कि स्लोप्स को कल्टीवेट करते हैं, 2-4 साल के बाद everything is lost, weathered layer is lost and the soil becomes naked. Intensive cultivation is also a problem. So poor water management and failure to provide suitable water disposal system. If we don't have a disposal system in nature which we can provide to moving water, so erosion is there. हमारे यहाँ तो क्या है कि जी we just block the way of the water channels, water courses, उसमें हम घर बना देते हैं, हाउसिंग स्कीम्स बना देते हैं। अब ज़ाहिर है कि ये जब हाउसिंग स्कीम ऐसी चीज़ें ब्लॉक होंगी तो डेफिनेटली वाटर हैज़ टू मूव, वाटर हैज़ टू मेक इट्स वे। वो जो वे बनेगा तो ज़ाहिर है वो फिर एरोजन काज करेगा। किसी भी इरोजन में 3 प्रोसेसेस इम्पॉर्टेंट हैं। एक डिटैचमेंट, जी पार्टिकल अलग हो जाए। दूसरा ट्रांसपोर्ट, कि वो वहाँ से मूव करे। और तीसरा वो कहीं पे डिपॉजिट हो। सो ये 3 प्रोसेस इम्पॉर्टेंट हैं। डिटैचमेंट, particles from soil surface are detached, removed, loosened, separated by one or combination of more than one eroding agencies. एक एजेंसी कर सकती है, मसलन freezing and thawing, running water, raindrops, air, wind, ice, or a combination may be there. लेकिन definitely depending upon the situation, some of the agencies are more important, some of the agencies are more effective in a certain area. Mountainous glaciated area में glacier is the responsible. Desert area में definitely wind is important. Where we have more rainfall, the water becomes important. But this does not mean that only water is doing, only air is doing, only glacier is there. Other things, other agencies, they also play their part. Soil with high amount of organic matter and cementing agents resist detachment. जिस सॉइल में पौधे ज़्यादा होंगे, ग्रास कवर ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे डिटैचमेंट कम होगी। आप देखें किसी भी घास वाले एरिया में कबल के चतवी नूरम्बे पके सख्ते सरजी मीन्स दे आर बाइंडिंग देम।
कैपेबिलिटी ऑफ eroding एजेंसी डिपेंड्स अपॉन द सॉइल पार्टिकल्स। अब eroding एजेंसी की जो कैपेबिलिटी है वो भी वेरिएबल है, दैट डिपेंड्स अपॉन द velocity and strength of the eroding agency, duration of action, amount of nature of the sediment, physiography, condition or physical properties of the soil. Velocity और strength of eroding कि जी उस पानी का, हवा का, जो भी एजेंसी है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वेलोसिटी का, फिर ड्यूरेशन कितनी है। 2 मिनट के लिए आई तो ठीक है, वो नहीं पास करेगी, लेकिन इफ इट परसिस्ट फॉर 5-6 days और आवर्स देन इट काजेज इरोशन। अमाउंट ऑफ नेचर ऑफ सेडिमेंट्स कि जी वो सेडिमेंट कैसे है, एरोडेबल है, नॉन एरोडेबल है, टफ है, बाइंड है, बाउंड है, सीमेंटेड है, या फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, सैंडी है, नॉन सैंडी है, क्ले है। सो ऑल these features together they play a role determine the eroding capacity. Detachment and abrasive action of a wind or water causes displacement of tiny soil particles. Abrasive action of wind, water. Tiny particles, they move first. High velocity winds and water with abrasive material have more power to detach soil particles. High velocity. हवा तो हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं होती। लेकिन थोड़ी सी हवा चलती है तो आप देखें कि ज़मीन के साथ साथ डस्ट मूव कर रही होती है या पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। लेकिन व्हेन द सेम विंड बिकम्स मोर फास्ट, क्विकर, हैज़ अ हायर वेलोसिटी, stays for a longer duration, it causes more erosion. These rapidly moving or grains or particles also dislodge other particles from soil by hitting. ये जो water carried particles हैं, stones हैं, wind carried particles हैं, ये आपस में collide करते हैं. They cause movement. They hit another particles and move. ये अगर आप दरिया सिंध के किनारे खड़े हो, गिलगित में, हुंजा में या ऐसे हिली एरियाज में, एक तो पानी का अपना शोर होता है, दूसरा शोर उन स्टोन्स का है, उन पत्थरों का है जो कि वो बहा के ले जाते हैं। स्पेशली गिलगित में, हुंजा में, बल्तिस्तान में, इफ़ यू आर स्टैंडिंग बाय रोड साइड यू कैन सी रोरिंग वॉइस। जो रोरिंग वॉइस है, दिस इज नॉट ओनली वाटर, it contains stones also. Transportation, second phenomena. ठीक है, डिटैच हो गया लेकिन वहीं पड़ा हुआ है, इरोजन तो नहीं हो रही, डिटैच हो गया। दिस डिटैच पार्टिकल हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा। दिस मूवमेंट इज caused by various agencies. एयर से हो सकता है, वाटर के हो सकता है, ग्रेविटेशनल हो सकता है, रिलेटेड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दे कैन प्ले द रोल। सो ये डिटैचमेंट डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द पार्टिकल, इंटेंसिटी ऑफ द एरोडिंग एजेंसी, विंड की, वाटर की, या साइज पार्टिकल जो है उसका, कि रोलिंग से हो सकता है, ड्रैगिंग हो सकता है, स्प्लैशिंग हो सकता है, फ्लोटिंग बाय एयर हो सकता है, वाटर और ग्लेशियर ट्रांसपोर्ट, ये सारे डिटैचिंग मटेरियल हैं। आप देखें, अगर आप कहीं सड़क पे पानी खड़ा है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन तेज़ मोटर गुजर रही है, आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, स्प्लैशिंग होती है। सेम इज़ ट्रू फॉर द रेन्स। अगर आप रेन में चल रहे हैं तो गीले तो आप होंगे, लेकिन नीचे से आपके शलवार पैंट गंदी हो जाएगी, बिकॉज स्प्लैशिंग मटेरियल कंटेन्स पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल उसमें होते हैं। फ्लोटिंग एयर्स, इसमें ज़ाहिर है पार्टिकल्स आर फ्लोटिंग इन द एयर। ये मैं कभी कभी सोचता था कि ये जो डेजर्ट में लोग हैं, इतनी सख्त गर्मी में उन्होंने मुंह आँख सब बंद किए होती हैं। जब मैं गया तो मुझे पता चला कि यू हैव टू डू इट,
अदरवाइज आपके गले मुले नाक कान आंखों में सब में सैंड होगी. सैंड मूव मूविंग ड्यूज आर वन बेस्ट एग्जाम्पल. ये आपको आज ड्यू नज़र आ रहा है, कल वहाँ पे ड्यू नहीं है. दिस इज मूविंग थ्रू द वेलोसिटी ऑफ द विंड. इसी तरह वाटर जो है इट कैरीज पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. यू कैन सी कि दोज fields, areas which are present near the water bodies, they are eroded. जमींदार कहते हैं जी वहाँ खुशबू का खूबू ओढ़ा, तो कैसे ओढ़ा? This is erosion by wind. So all of them they have to transport it. Fine or lighter particles they are transported to longer distance than large heavy particles. जो फाइन पार्टिकल्स हल्के पार्टिकल्स होते हैं दे कैन बी कैरिड टू लॉन्गर डिस्टेंस बाय द विंड और बाय द वाटर, बोथ केसेस में. लेकिन हैवियर पार्टिकल्स दे आर मूव टू अ शॉर्टर डिस्टेंस. पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर और वाटर दे मूव लॉन्ग डिस्टेंसेस. हैवी पार्टिकल्स आर ड्रैग्ड और रोल्ड अलोंग सॉइल सरफेस. हैवी पार्टिकल जो है ना ये ड्रैगिंग होती है, रोलिंग होती है. दे कीप ऑन ड्रैगिंग रोलिंग बिकॉज दे cannot be picked up in a free movement due to their weight size. Higher the velocity and amount of transporting agency, greater would be the carrying capability or capacity. अगर कोई भी है, मसलन एयर है, वाटर है, ग्लेशियर है, वो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, स्पीड तेज़ है, तो वो ज़्यादा मटेरियल को मूव करेगा. मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि एक बंदा स्लो जा रहा है, दूसरे से टकरा जाता है, तो वो जिससे टकराता है कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होता सिवाय इसकी कि वो आपको घूर के देखता है. आप भागते हुए आ रहे हैं, यू हैव अ हायर वेलोसिटी, और किसी भी बंदे से आप टकराते हैं वो गिर जाता है नीचे. दिस इज व्हाट हैपन्स. डेपोजिशन मस्ट है, क्योंकि ये जो एयर है, ग्लेशियर है, वाटर है, इट कैन नॉट टेक दोज पार्टिकल्स which have been blown, taken up in a suspension form, in a moving form to indefinite distance. They would be transported at some suitable deposition sites. सूटेबल डेपोजिशन साइट से क्या मतलब होगा कि जी रास्ते में कोई दरिया आ गया, रास्ते में पहाड़ आ गया, कोई छोटी सी चीज़ आ गई, पत्थर आ गई, कोई भी जो है, या उसकी अपनी ताकत कम हो गई. एक बंदा जो है वो वेट ले जा रहा है, दोनों हाथों में उसकी वेट है, भागता भागता जा रहा है, अल्टीमेटली वो थक जाता है, वेट कम हो जाता है. वो कहते हैं जी बुजला लोगों ने के दिल तक के ब्याल आजम और बस डिपॉजिट कर देता है, छोड़ देता है, बाद में ले जाता है. सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड्स अपॉन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी. दिस इज what is the power of that agency, and size and weight of the particles. The particle का weight size कितना है. Natural barriers also provide deposition sites. Natural barriers जैसे कि मैंने कहा, maybe a small hill, maybe a stone, maybe a water body, maybe a wall, that is natural bodies. Heavier, larger particles are deposited at a shorter distance than the light. Heavier particles, अगर आप देखें पानी बह रहा है तो बहता हुआ पानी स्ट्रेटिफिकेशन काज करता है. स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स particles की stratification. Larger particles, then a little bit smaller, and then finer particles. दरिया के किनारे आप देखिए particles पड़े होते हैं, stone पड़े होते हैं. They could not be carried by the water, so they are deposited along margins, upland पे. Flood during descending water from the upland transport larger particles, stones, boulders to greater distance. Fine particles suspended in water or air can travel
longer distance and before deposition. Particles during creep or saltations are deposited at a shorter distance than those transported in a suspension. जो सस्पेंशन फॉर्म में होते हैं वो आप देखें छतों पे डिपॉजिट हो जाते हैं, पौधों के ऊपर से डिपॉजिट हो जाती हैं। सस्पेंशन फॉर्म में होते हैं, कहीं भी डिपॉजिट हो सकते हैं। Heavy particles are deposited in windward side while finer on the lee side. Windward side पे heavier particles और fine particles on the lee side उस deposition site या barrier से उसके पीछे डिपॉजिट होते हैं। Based on the detaching agencies या carrying agencies, 3 किस्म के erosion हैं। एक को हम वाटर erosion कहते हैं, the material which is detached, carried, deposited by water. जाहिर है कि ये उन एरियाज में होगा जहाँ फ्लड आता है, जहाँ रेनफॉल ज़्यादा है, जहाँ पानी ज़्यादा है। डेजर्ट में ये नहीं होगा या कम होगा। विंड erosion जाहिर है कि ये ड्राई एरिया फिनोमेना है, डेजर्ट में ज़्यादा होगा। The particles are detached by the wind, transported by the wind and deposited by the wind. और तीसरी किस्म जो है हमारे यहाँ या बहुत सी जगहों पे हाई माउंटेन सिस्टम में ग्लेशियल या ग्लेशियल erosion है, जो कि ग्लेशियल मूवमेंट की वजह से होते हैं समर में। विंटर में नहीं होता क्योंकि विंटर में the glaciers they are frozen. When they start melting, they start moving water stones along with the moving glacier. These 3 types of erosional processes may occur simultaneously in combination. अब ये एक और बात आती है जी कि हर जगह ये नहीं है कि जी बस वो कहते जी बस ये मेरा एरिया मैं इसको करता हूँ आप न करें। एयर कह जी बस आप उसमें ला कर ज़बैकुम तबैन के नो। Wherever all these 3 can be possibly together, so a combination occurs. However, the relative importance impact varies in different geographical regions and related climatic conditions. होंगे तीनों एक जगह, हो सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन जो relative impact है वो vary करेगा depending upon geographical regions या related climatic conditions. Wind erosion is dominating in deserts, arid area. थल, थर, सिंध, बलूचिस्तान वहाँ पे ये ज़्यादा है, लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो वो भी हो जाएगा। Water erosion is active in the humid rainy area. Again, अगर humid है, rainy area है, पानी ज़्यादा है तो पानी का रोल ज़्यादा होगा, wind का रोल कम होगा। Glacial erosion is common in high altitude area in the mountainous regions. So, तीनों possibilities are there. Thank you very much once again. You can send me comments or anything you like further. Thank you very much.